Good afternoon, students. So, this is our third lecture. In the earlier two lectures, we have discussed so many different clauses with reference to different IRCs. And if you remember, we had started with the design of a pre-stressed concrete deck slab bridge when it is subjected to IRC class AA tracked vehicle. What was the question? We will do a fast revision of that and then we will go for the solution. If you remember, the question was to design a pre-stressed concrete deck slab bridge. The carriage width was 7.5 meter and there was 1.5 meter footpath on either side. The varying code was 100 mm. The depth of curve above the varying code was given as 300 mm. Right? As we were supposed to design this, so before going for the design, we had to analyze it. If you will see, this is how the cross section of that bridge will be. There is a varying code of 100 mm and the curve was 300 mm above this. And the load acting was IRC class AA tracked vehicle. There are different type of vehicles. After solving this problem for IRC class AA, we will solve or I will explain you what difference will be there if we are having loading other than IRC class AA tracked vehicle. ये प्रॉब्लम कंप्लीट होने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर आईआरसी क्लास ए ट्रैक्ड व्हीकल नहीं होता और अगर कोई दूसरा लोडिंग रहता तो वहां पर हमने कैसे सॉल्व करना चाहिए, व्हाट डिफरेंस विल बी देयर, दैट विल डिस्कस. इफ यू रिमेंबर व्हाट वी हैड डन, पहले हमने डेड लोड का कैलकुलेशन किया था. डेड लोड में क्या था, it was a varying code and the deck slab. तो हमने अज्यूम किया था लेट देयर इज ए, से दिस इज the plan. Here it is supported here. The distance will be given. The effective span was given as 9 meter. If the effective span is not given, so in that case the Killian span and the width of support or the bearing will be given. We consider center to center of the span or center to center of the bearing as the effective span. First we had calculated the load for 1 meter wide beam because this will act as a one-way slab as it is supported at these two ends only. So there will be only one direction in which the deflection will be. So the behavior will be like a one-way slab. So for this one-way slab, considering the width is equal to 1 meter, we have determined the self weight of deck, this pre-stressed concrete deck slab. Then we had considered the self weight of the bearing code, and for that we had determined
the bending moment, dead load bending moment. For deck slab, then we had determined the dead load bending moment for wearing coat. When the 1 meter wide strip is considered from the deck slab. Similarly, we had determined the dead load shear force because of the deck slab, and we had considered the dead load shear force for the wearing coat. Those loads were calculated separately. फिर हमने कंसिडर किया था लेट द 1 meter वाइड स्ट्रिप इज फ्रॉम द फुटपाथ. देन वी हैड कैलकुलेटेड, यहां तक हमने कंसिडर किया था कि डेक स्लैब है और उसके ऊपर का दिस इज फुटपाथ पाथ. द सल्फेट बार गिवन इन IRC 5 or IRC 6. From IRC 6 we had considered the sulfate of different material. Then we had calculated the dead load bending moment due to the deck slab plus footpath plus railing, and we had determined the dead load shear force also. हमने इतना पार्ट किया था. फिर उसके बाद आफ्टर गेटिंग ऑल दीज वैल्यूज, उसके बाद हमने किया था लाइव लोड कैलकुलेशन. व्हाट वी डू इन केस ऑफ द कैलकुलेशन फॉर द लाइव लोड. पहले तो हमको पता रहना चाहिए हाउ मेनी लेन्स वी आर कंसिडरिंग. इफ यू विल रेफर IRC 5, you will find that if the carriage width is 7.5 meter, so in that case we have to consider it was 7.6 meter the carriage width. If it is 7.5 meter minimum, when you want the IRC class AA load to pass, if you want IRC class AA load to pass, then the minimum carriage width for 2 lanes must be 7.5 meter. This is minimum. और अगर आपको याद रहेगा, we had discussed in our last lecture how do we decide the number of lanes. For 1 lane it is 4.25. For 2 lanes it is minimum 5.3 to 6 point something, I don't remember now. वो हमको दिया है IRC 6 में. If you refer IRC 6, here you will find for 2 lanes कितना रहना चाहिए. .1 meter. These are again the minimum. Right? All these clauses we have discussed. अगर 3 लेन मुझे प्रोवाइड करना है, then it must be minimum 9.6 meter. If I want 3 lane, then it must be minimum ranging from 9.6 meter to 13.1 meter. As you will see here, it is greater than 5.3 or 6.1, it is greater than that, and it is less than 9.6. It means that the given is 7.6 meter carriageway width. So it means that it is a 2-lane bridge. And what are the guidelines in the code? If it is a 2-lane bridge, for every 2 lanes of IRC class A train of vehicles, we consider only one IRC class AA vehicle will pass. So it means that there will be just one IRC class AA vehicle on this carriageway width. Then we had discussed what must be the distance between the 2 successive vehicles. एक के पीछे अगर एक व्हीकल रहते हैं IRC class AA tagged vehicles, then what must be the minimum distance? The minimum distance between the 2 IRC class AA tagged vehicles must be equal to 90 meters. अलग-अलग vehicles के लिए अलग-अलग distances है. If it is a tracked vehicle, then it is 90 meter. It is given here. The distance between the 2 vehicles, what it must be.
See, if you see here, you will find it the distance between the two vehicles. The nose to tail space between the two successive vehicles shall not be less than 90 meter for the tracked vehicle. For wheeled vehicle, the space between the successive vehicle shall not be less than 30. अगर ये wheeled vehicle होते, IRC class AA wheeled vehicle, ये अगर IRC 70R wheeled vehicle, then the distance between the two successive vehicles must be 30 meters. It is on page number 10. There is a note here below the figure 1 of IRC 6. आपको ये सब IRC लेकर बैठना पड़ेगा in parallel. So from this page number 10, below figure 1, you will find that if it is a tracked vehicle, then the minimum distance must be 90 meter, and if it is a wheeled vehicle, IRC class AA or class 70R, so in that case it is 30 meters. As the span is 9 meter, इसका मतलब इसका पीछे या इसके आगे जो दूसरे व्हीकल्स रहेंगे वो स्पैन के बाहर रहेंगे. So there will not be any other imposed load or the live load acting other than this one IRC class AA tracked vehicle. What was the total load acting? ये सब 70R या IRC class AA दोनों के लिए it is 700 kilonewton. That will be shared by these two wheels. अगर मुझे लाइव लोड के लिए इसको एनालाइज करना है, then I must know the dispersion effect. I must know the position along and I must know the position across. ये व्हीकल को हमने कहां रखना चाहिए. अगर आपको याद रहेगा, for IRC class AA tracked vehicle, if you want the bending moment to be maximum, the vehicle is to be placed centrally. The total span is 9 meter. The vehicle is placed centrally. और मैंने ये क्लॉज भी दिया था कि एंगल ऑफ डिस्पर्शन विल बी इक्वल टू 45 डिग्री. So this is from the bearing coat and the deck slab. So this is the span on which the effect of that load will be. हमने कंसीडर किया था the thickness of deck slab is equal to 450 mm. That was assumed. अगर ये अनसेफ आ जाता है then we will make the change. How we had assumed the thickness of the deck slab as 450 mm? That was considered as the 50 mm per meter span. A thumb rule. 9 meter is the span. That's why the depth was considered as 450. लेक्चर अटेंड करने से पहले पिछले के लेक्चर भी आपने देखना चाहिए एंड आई विल सजेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट मेकिंग नोट्स इन पैरेलल. नोट्स बनाते रहना चाहिए आप लोग ने पैरेलल में, so that you will understand better. This was the span on which the effect of that load will be. It is 450 plus this deck slab was equal to 100 mm. तो यहां से यहां का जाएगा 0.55 मीटर. This is 0.55 मीटर. How much this length was in contact here? That was 3.6 meters. So how much it will be? 3.6 plus 1.1. So that was equal to 4.7 meters. So it was 4.7 meters. The effect of this load will be for a span of 4.7 meters centrally. 9 meter से 4.7 meter minus कर दीजिए. It is 9 minus 4.7. So that will be equal to 0.3. It is 8.3. So it will be equal to 4.15 and this is equal to 4.15 on either side because this is placed symmetrically at the center. On this much of span the effect of this load will be. This is क्योंकि मुझे जब ये deck slab डिजाइन करना है, the deck slab will act as a flexural member. It is a bending member, so we have to design it for bending. We have to design it for bending. So bending moment determine करने के लिए I must know the position where the vehicle must be along and across such that it must produce the maximum bending moment. अगर आपको याद रहेगा, हमने ये देखा था कि what must be the minimum clearance.
The minimum clearance must be equal to 1.2 meter for IRC class AA tracked vehicle. Where did you got this value from? From the annexure of IRC 6. If you refer the annexure for IRC 6, there the guidelines are available for IRC class AA tracked vehicle. It is available on page number 87. What is given here? It is on page number 87 below figure A1. It is note 4. Class A loading is applicable only for the bridges having the carriage width of 5.3 meter and above. That is 1.2 into 2 plus 2.9. 2.9 is nothing but the outer quarter of the wheel. क्योंकि ये distance था 0.85. This is 0.85 and this internal distance is 1.2. So that total will be equal to 2.9 meter. 1.2 into 2 plus 2.9 is 5.3. इसके लिए हमने बोला है कि अगर 2 लेने तो मिनिमम 5.3 चाहिए, लेकिन अगर आपको याद रहेगा हमने IRC 5 में एक क्लॉज देखा है कि if you want a IRC class A tracked vehicle to pass for 2 lanes, minimum 7.5 meter is the carriage width to be provided. So in the question the carriage way width is given as 7.6. It means that this is a 2-lane bridge. The minimum, see the note, that is note on page number 87.4. The minimum clearance between the road face of the curve and the outer edge of the wheel or track C shall be 1.2 meters. So the minimum clearance must be equal to 1.2 meter. So as to produce the maximum bending moment, we will keep it at the minimum clearance. This is 1.5 meter. Then this distance was determined. This distance is also equal to 1.5 because the total carriageway width is equal to 7.6 meter. उसमें से माइनस करना पड़ेगा 1.2 plus 0.85 plus 1.2 plus 0.85. This 1.2 is the minimum clearance, 0.85 is this width of the track, 1.2 is the width of the main body, plus 0.85 is the width of this track. So total it will be equal to कितना हो जाएगा ये 0.17, ये दोनों आ जाता है 1.7 plus 2.4. So that will be equal to 4. 4.1 minus कर देंगे 7.6 minus 4.1, that will be equal to 3.5 meter. So this distance was equal to 3.5 meter. It is simple. We are playing with the distances, right? हम distances देख रहे हैं कितने हैं. What are the distances available? Next क्या करना रहेगा? We have to see that out on how much area the effect of this load will be. Because this is not it is not a load which is acting on the entire area. आपने जो IS 456 में जो भी slab डिजाइन किया था उसमें live load was considered as acting on the entire area. But this is not the case here. It is a patch load. The load is acting on certain area. So if you will see in the plan, the position of the vehicle is placed centrally at certain minimum clearance across the bridge, across the span. In the direction of span it is center, but across it is at the minimum clearance. So on how much area the effect of this load will be? In the direction of span centrally it will be on a span of 4.7 meter. So here it is. Centrally it will be acting at a distance of 4.7 meter. ये तो हो गया है along. अभी across कितना part पर act होगा? So the effect of this load will be on that part. The influence field of the load is to be determined. And how much area the effect of that load will be? How that can be determined? And how much area the effect of this load will be? So for that we need to determine B effective. इसके लिए भी कोड में गाइडलाइन दिया है and I had given you the clause. It is alpha A in bracket 1 minus A divided by L naught
plus B1. This equation is there. So as to determine the effective width on which the effect of this load will be. Effective width यहाँ से मिलेगा, effective length यहाँ से मिलेगा. So we will have a patch on which the effect of that load will be. लोड पूरे स्लैब पर एक्ट नहीं हो रहा है. द अलाइ लोड इज एक्टिंग ऑन ए पार्ट ऑफ द स्लैब. तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि कितने पार्ट पर एक्ट हो रहा है. सो दैट वी विल हैव द इंटेंसिटी ऑफ लोड. देन वी विल कंसीडर 1 meter wide strip and then we will have the live load bending moment. Alpha is a coefficient. It depends on the basis of B by L naught. ये सब IRC 112 में दिया है. That table is available. B is nothing but the entire width on which the dispersion is possible. That is equal to 1.5 plus 7.6 plus 1.5. So that is 7.6 plus 3 is nothing but 10.6. Divided by L naught is the span. So we were having the value of B by L naught. On the basis of that, the value of alpha was determined. Right? Because it is a simply supported slab. So referring the table which is given in IRC 112, it is available on page number 279. Is it right? This we had discussed. How much was the value of alpha? What was the value of alpha? How much was the value of alpha? Will someone please give me the answer? You must be having the solution for the question, whatever part we had solved in the last lecture, that must be available with you. So if you will keep on giving me the answer, then we can proceed. आपको मुझे आंसर देते रहना चाहिए. For simply supported slab, B by L naught is there. Alpha for simply supported slab, alpha for continuous slab, again B by L naught. Right, there is a table here. It is available on page number 279. So from here, for the solid simply supported slab, we were having 2.631. Fine. This equation is given on page number 278. ये आपके पास अब रहना चाहिए कोड अवेलेबल. 2.631 was the value of alpha. A is nothing but position of this concentrated load from the nearer support. So as it is placed at equidistance from both the supports, so it will be at half the distance. The position of this concentrated, we are talking about this concentrated load. We are talking about this concentrated load. From the nearer support, both the supports are equidistance. So the value of alpha will be half the span. So that will be equal to 4.5. Because the span is 9 meter. It is 1 minus 4.5 divided by 9 plus B1 for this concentrated load perpendicular to the direction of span. The dispersion effect is to be only considered from the bearing chord with an angle of 45 degrees. That is defined there. So this is 0.1 and this is again 0.1. So it is 0.85 plus 0.1 plus 0.1. So that will get added with 0.2. So it is 1.05 meters plus 1.05. So we were having the value of B effective. That is nothing but the effective width on which the dispersion effect of this load will be. How much is the value of B effective? What is the effective width on which the effect of this load is? Will someone please give me the answer? The effective width on which the dispersion effect of this load will be. $6.969. 6.9 हमने लास्ट टाइम भी इतने लिया था क्या? क्या हमने 7 ले लिया था या 6.97 लिया था? What was that?
How much we had considered? How much that was considered in the last lecture, Sophia? If I consider the B effective is equal to 6.97 meter, 6.969. So if it is 6.97 meter, so on one side, right, on one side of this wheel, how much it will be, the effect of this load will be. Okay, fine. The effect of this load will be 3.485 meters on one side. On one side from the center of this load. So how much this distance is from the center of the load? How much this distance available is? It is 1.5 plus 1.2 and it is half of 0.85. So that will be 0.425. So 5 to 3.125 meter is the distance available. And up to how much is the distance up to which the dispersion is possible? 3.485. It means that इसका dispersion इसके बाहर निकल जाएगा, right? इसके बाहर तक उसका dispersion effect हो सकता है. But there is no continuity here. So maximum it may go up to 3.125 meters only. Actually ये 3.485 meter तक जा सकता था dispersion effect. But that much of distance is not available. How much is the distance available between the center of these two wheels? It is 0.85 by 2 plus 1.2 plus 0.85 by 2. So that is 1.2 plus 0.85. So that is 5, 2.05 meters center to center. और डिस्पर्शन कहां तक जाएगा? 3.485. इसका मतलब इसके सेंटर से आगे तक निकल जाएगा डिस्पर्शन का इफेक्ट. यहां तक जाएगा ऐसे. लेट दिस डिस्टेंस विल बी अगेन 4.875, सॉरी 3.485, 485 इतना डिस्टेंस अवेलेबल है. नाउ फ्रॉम द सेंटर, how much is distance available here on the other side? How much is the distance available? 0.85 by 2. Only distances we are seeing कि कितना स्पेस अवेलेबल है, डिस्पर्शन कहां तक जाएगा? प्लस 3.5 प्लस 1.5. So that is 425 plus 3.5 plus 1.5. So that is 5 to 14 carried 1, 3 4 और 1 5. 5.425 is the distance available here. 5.425. लेकिन इसका सेंटर से कितना दूर तक डिस्पर्शन हो सकता है? 3.485. इसका मतलब इसका डिस्पर्शन यहां तक चलेगा. अच्छा, फुटपाथ तक कितना डिस्टेंस अवेलेबल है? हाउ मच इज द डिस्टेंस अवेलेबल अप टू फुटपाथ? मैं देखना चाहता हूं कि फुटपाथ में भी उसका डिस्पर्शन जा रहा है कि फुटपाथ से पहले कंप्लीट हो जा रहा है. हाउ टू वेरीफाई दैट? That will be equal to 0.85 by 2. इसका सेंटर से इधर plus 3.5 the clear distance available. So it is 0.425 plus 3.5. So that is 3.94925 and it is more than 3.485. इसका मतलब यहाँ पर फुटपाथ में भी नहीं जाएगा, उसके पहले ही इसका डिस्पर्शन कहीं कंप्लीट हो जा रहा है. That is where the dispersion effect is. So if you will see the actual area on which the effect of this load will be along the span for a distance of 4.7 meter and across, यहाँ पर फुटपाथ के बाहर तक निकल गया है. So up to here we will consider फुटपाथ तक आ गया है और यहाँ पर फुटपाथ से पहले ही है. So this is the patch on which the effect of this load will be. Right? यहां पर फुटपाथ में नहीं जा रहा है, उससे पहले ही कंप्लीट हो गया. So what is the net B effective? What is the net effective width? We will determine B effective net. That is the effective width on which the effect of this load will be.
How to get the effective width on which the effect of this load will be? सेंटर से लेफ्ट में 3.125 प्लस सेंटर टू सेंटर इट इज 2.05 सेंटर टू सेंटर ऑफ द ट्रैक. फिर ट्रैक के ये साइड में यहां से कितना डिस्टेंस है? हाउ मच दिस डिस्टेंस इज? दैट विल बी इक्वल टू 3.485 meters. So it will be plus 3.485 meters. How much this total will be? 5 और 5 10 कैरिड 1, 8 और 1 9 और 5 14, 15 16 का 6 कैरिड 1, 4 और 1 5 और 1 6 डॉट डेसिमल 3 और 3 6 और 2 8 8.66 मीटर. 8.66 meter. Is it all right? Have you understood this? How we are getting this patch on which the effect of load is along the span and across the span or in the direction of width of that bridge. कितने एरिया पर उसका इफेक्ट होगा? यहां पर अगर हम देखते हैं तो द लोड दैट विल गेट ट्रांसफर फ्रॉम दिस इज इक्वल टू 350. द लोड दैट विल गेट ट्रांसफर फ्रॉम हियर इज अगेन इक्वल टू 350, but the dispersion effect is getting merged. So I will consider the total load as equal to 700 kilonewton. So the total load acting here is equal to 700 kilonewton on that much of area. So how to get now the intensity of load? How to get the intensity of live load? How will you get? The total area or the total load, that is 700 divided by the area on which the effect of load is 4.7 multiplied by 8.66. Okay. Okay, fine. Thank you, Sufyan. Thank you, Sufyan. I expect others also to be equally active, because if you keep on giving me the answers, that will give me the confidence. मुझे समझ में आएगा कि हाँ ठीक है यार, आप लोग को भी समझ में आ रहा है. So please keep giving me the answer. Now if you'll see, if you'll refer IRC 6, what are different loads which are to be considered at the time of designing? The different loads which are to be considered at the time of designing, so many different things are given here. Right? There is a list of load. There is a list of load that is given here on page number 5, clause 202.1. Dead load, live load, snow load, impact factor, impact due to the floating bodies or vessels. If suppose the bridge is designed over a water body, then if whatever floating bodies are there, because of that also there may be some kind of impact. Vehicle collision, wind, water current, and the longitudinal, the attractive forces when the object gets accelerated, or when it is the brakes are applied, because of that the attractive forces will develop. If suppose it is a curve, then the centrifugal force will be there. If suppose it is a submersible bridge, then the buoyancy effect will also be there. There are so many other things are also included. But as I have told you, here we will be designing only for the dead and live load. But the impact load, that is in the order of serial number 4 on page number 5, clause 202.1, impact factor or the vehicular live load. Please refer this. How to consider this, the impact factor? What is here? You please refer page number 30. Please refer page number 30. It is clause 208 on page number 30 of IRC 6. आपके पास IRC रहना चाहिए. अगर आप मेरे पैरेलल में रेफर करते रहेंगे, then only you will understand. If you will not refer, then you will not understand. Please keep the IRCs referring in parallel to me. Please sit with the calculator. Please sit with the all IRCs and IS 1343.
So it is on page number 30 of IRC, clause 208, impact. 208.1. Provision for the impact or the dynamic action shall be made by increment of the live load by an impact allowance expressed as a fraction or a percentage of the applied live load. What is the applied live load? We have to increase that live load by certain percentage so as to take into account the impact effect of the loading or so as to account the dynamic effect of loading. It is the live load is not a static load. मैंने पहले बोला हमने IS 456 के अंदर जो स्लैब डिजाइन किया है उसमें दो चीजें थे. एक तो whatever live load was acting, that was acting on the entire slab. Second, whatever that live load was, that was considered as the static live load. लेकिन यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स है. एक तो the live load is not acting on the entire area, it is acting on a patch. There is a limited influence field for this live load. Second, it is a moving load, so we need to account the dynamic effect of that also. So for that we are having this clause 208. What this clause is? Provision for the impact or the dynamic action shall be made by an increment of the live load by an impact allowance expressed as a fraction or a percentage of the applied live load. 208.2 for class A or class B loading. यहाँ पर भी अलग अलग क्लॉजेस है. 208.2 is for क्लास ए और क्लास बी लोडिंग, लेकिन हम क्लास ए और क्लास बी लोडिंग की बात नहीं कर रहे हैं अभी. वी आर टॉकिंग अबाउट आईआरसी क्लास ए ट्रैक्ड व्हीकल. फिर उसके नीचे आते हैं 208.3 फॉर क्लास ए लोडिंग एंड क्लास 7TR लोडिंग. राइट, अभी हमको ये रेफर करना पड़ेगा. 208.3 ऑन पेज नंबर 30 of the code. That is for IRC class A loading and 7TR loading. 7TR और IRC class A के लिए एक ही गाइडलाइंस है. अब अगर हम नीचे पढ़ते आते हैं, the value of the impact percentage shall be taken as follows for span less than 9 meter. और उसमें भी क्या लिखा है देखिए, for tracked vehicle, for wheeled vehicle. लेकिन हमारा स्पैन 9 मीटर है. It is not less than 9 meter. अगर less than 9 meter रहेगा, then that clause is applicable. What is next? For span 9 meter or more, for reinforced concrete bridge, for tracked vehicle, for wheeled vehicle, उसके नीचे दिया है steel bridge. इसका मतलब on what different factor the impact load depends or the impact of the live load depends. कौन से फैक्टर पर है? व्हाट इज द नेचर ऑफ लोडिंग? आईआरसी क्लास ए है कि आईआरसी क्लास बी है या 7TR है या आईआरसी क्लास ए है? व्हाट टाइप ऑफ लोडिंग इट इज, इट डिपेंड्स ऑन दैट इज वन थिंग. व्हाट इज द अदर फैक्टर ऑन व्हिच इट डिपेंड्स? वेदर इट इज a tracked vehicle or a wheeled vehicle, it depends on that. What is the third factor on which it depends? It depends on what material is used for the construction. Is it a reinforced concrete bridge or a steel bridge? So ours is a reinforced concrete. Rather reinforced concrete, we are using pre-stressed concrete, so it is equally applicable there. Reinforced concrete or the pre-stressed concrete. So for pre-stressed concrete deck slab bridge, for IRC class A tracked vehicle, so तीन चीजें हैं: tracked vehicle, IRC class A, pre-stressed concrete or span. The span is 9 meter. These are the factors on which this impact fraction depends. तो हमने कितना लेना चाहिए? Will someone please suggest me? 208.2 is applicable for class A or class B loading. 208.3 is applicable for class A loading and 7TR loading. उसमें A और B दो पार्ट दिया है. A part when the span is less than 9 meter. B part when the span is 9 meter or more. फिर ठीक है, ours is the 9 meter or more. वहां देखेंगे. Reinforced concrete bridge, right, it is equally applicable for pre-stressed bridge. फिर उसमें भी दो पार्ट दिया है, tracked vehicle and wheeled vehicle. तो क्या लिखता है? 10% up to a span of 40 meter in accordance with the curve in figure 9 for span in excess of 40 meter.
अगर ये 40 मीटर तक का स्पैन है, इफ इट इज 9 मीटर और मोर अप टू 40 मीटर, in that case the impact factor is to be considered as 10%. अगर 40 मीटर से ज्यादा का स्पैन रहता है, then that curve is to be referred, which is on page number 31, figure 9. Is it okay? So how much we will consider the percentage increase in the live load so as to account its dynamic effect? Who will answer? Tushar, do you have the code available with you? Sufyan, how much that answer must be? How much that percentage increase in the live load must be? How much that percentage increase must be? देखिए, this is on page number 30. I expect you to answer 10%. Fine. It is 208.3 for class A loading and 70R loading. For span less than 9 meter हम वो नहीं देखेंगे. For span 9 meter or more हमारे लिए applicable है. Reinforced concrete bridge, so it is equally applicable for pre-stressed concrete bridge. Tracked end wheel, ours is tracked vehicle. 10% up to a span of 40 meter. 9 meter से 40 मीटर तक रहता है, then it is 10% we have to increase. और अगर 40 मीटर से ज्यादा स्पैन रहता है, then we have to refer this curve which is given on page number 31. So here we will increase that by 10%. So I will increase it by 1.1%. What is this? This is impact factor. What is impact factor? So as to take into account the dynamic effect of loading, and I will get the intensity of load. So what is the intensity of load? राइट, हमने ये सब देखा है अभी क्लॉज. इम्पैक्ट फैक्टर क्या है समझ गए हैं. इम्पैक्ट फैक्टर चार चीजों पर डिपेंड करता है. नंबर वन, व्हाट इज द नेचर ऑफ लोडिंग. सेकंड, अगर ट्रैक्ड है या व्हील्ड है. थर्ड, व्हाट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज. फोर्थ, व्हाट इज द स्पैन. सो दीज आर द फोर फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स. सो फॉर द गिवन कंडीशंस, the impact factor here will be 10%. So we have increased it by 10%. So what is the intensity of load? What is the intensity of load? चलिए मुझे कैलकुलेट यार, प्लीज सिट विद द कैलकुलेटर. 18.92. थैंक यू. So it is equal to 18.92 kilonewton per meter square. So here the intensity of load is 18.92 kilonewton per meter square. But if I consider a 1 meter wide strip, if I consider a 1 meter wide strip, then how much that must be for 1 meter wide strip? It will get multiplied by 1 meter. So it is 18.92 kilonewton per meter. So it is 18.92 kilonewton per meter is the intensity of load. Is that right? Can you tell me how much is the maximum bending moment? It is symmetrically placed. So this is how the bending moment diagram. यहाँ से linear रहेगा, यहाँ linear रहेगा, यहाँ parabolic रहेगा, and maximum will be at the center. The maximum bending moment. So we will have the live load bending moment. How to get this? Get the support reaction and then get the bending moment. Get the support reactions. कितना रहेगा? 18.92 multiplied by 4.7 total load divided by 2 because it is symmetric. So it will be equal support. The reactions are equal because the loading is symmetric. It is a symmetric beam, symmetrically loaded beam. So the two reactions are equal. Get the reactions.
Then determine the bending moment at the center. How much is the bending moment? Please give me the answer for the bending moment. Whatever reaction I will get, that reaction multiplied by this distance will be up to center is 4.5. So that reaction R multiplied by 4.5 minus 18.92 multiplied by half of this 4.7 is 4.7 by 2, because this much only I have to consider, and the load will act at center of that. So that will be 4.7 divided by 4, and I will get the bending moment at the center. Get reaction, put that reaction here and get the bending moment. Please answer me. बच्चों, हम स्क्रीन के दो अलग अलग साइड है. यू आर ऑन दैट साइड ऑफ द स्क्रीन, आई एम ऑन दिस साइड ऑफ द कैमरा. वी आर नॉट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. अगर हम क्लासरूम में रहते तो टीचिंग लर्निंग एक बहुत अलग काम रहता. वहां पर आपके पास आईआरसीज अवेलेबल है या नहीं है, कैलकुलेटर्स अवेलेबल है या नहीं है, हाउ मच अटेंटिव यू आर, वेदर यू आर पेइंग सफिशिएंट अटेंशन और नॉट, आपका कॉन्सेंट्रेशन किधर है. मैं आपको देखते रहता, बॉडी लैंग्वेज रीड करता, आप मेरी बॉडी लैंग्वेज रीड करते, हमारा आई कांटेक्ट होता, तो वी वुड हैव लर्न डिफरेंटली देयर. लेकिन यहां पर वी आर ऑन द टू डिफरेंट साइड ऑफ द कैमरा. मुझे नहीं पता है आपका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, कितना अटेंशन है, आपके पास आईआरसी अवेलेबल है या नहीं है, कोर्स अवेलेबल है या नहीं है, कैलकुलेटर अवेलेबल है या नहीं है, आर यू डूइंग कैलकुलेशन इन पैरेलल टू मी और नॉट, मुझे नहीं पता है. आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ऐसे सिचुएशन में. यू हैव टू बी मोर अटेंटिव, क्योंकि फ्यूचर आपके है. मार्केट में आपको जाना है, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ इन द मार्केट, सो यू हैव टू लर्न ऑल द कांसेप्ट्स. So it is 122.98 is the reaction. Okay, fine. Thank you. What is next after getting the reaction? Get the bending moment. $747 नहीं रहेगा. I am not. I don't agree to this. इतना नहीं रहेगा. हो सकता है कि रिएक्शन भी इतना ना हो. फिर रिएक्शन कितना हो गया है? 18 और 5 100 डिवाइड बाय 2. चला 50 से कम आना चाहिए रिएक्शन. 18.92 आई कंसीडर्ड एज 20, 4.7 आई कंसीडर्ड एज 5. तो कितना हो गया ये? 20 into 5 100 डिवाइड बाय 250. तो रिएक्शन भी 50 से कम रहेगा. सो व्हाई अदर्स आर नॉट डूइंग कैलकुलेशन? वेयर आर यू मिस्टर सादिक, Noman? Otherwise, I will shift to Google Classroom. We will shift to Google Meet. वहां पर ज्यादा इंटरेक्टिव होगा. अदरवाइज, क्योंकि तुम लोग उधर है या नहीं है मुझे समझ में नहीं आ रहा है. नोमान, आज उधर 44.46. ओके, ये हो सकता है. द रिएक्शन विल बी 44.46. वेयर आर यू सादिक? प्लीज कीप गिविंग, प्लीज गिव मी द अटेंडेंस. सादिक, नोमान, वेयर आर द अदर्स? पटेल, ठीक है, डिसाइड कर लेते कि आज 2 अटेंड करेंगे, कल दूसरे 2 अटेंड करने का. Fahim, where are you, Fahim? Anurag, Janvi, Gulam Khaja, Moiz, I want everybody to be here. चलिए, tell me the bending moment. अरे फास्ट आंसर करो यार. $44.46. अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रथमेश. सो द बेंडिंग मोमेंट इज 236. मुझे इस पर भी डाउट है यार. आई हैव डाउट ऑन दिस. 44 into 4.5, 44 into 4, ये ज्यादा 200 से कम रहेगा. उसमें से और कुछ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
How come the answer will be 236? Sufyan? अरे तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे, देयर इज नो सेंस इन दिस यार। मैं अदरवाइज मैं कुछ तो सारा पढ़ा के निकल जाऊंगा। देयर इज नो सेंस इन दैट। अगर तुम लोग कॉपरेट नहीं करोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा, क्योंकि आगे के सब सोल्यूशन इस पर डिपेंड करता है। द डिजाइन डिपेंड्स ऑन द एनालिसिस। इफ वी डोंट हैव द वैल्यूज अवेलेबल, व्हाट वी विल डू फॉर द डिजाइन में हम क्या करेंगे? अरे यार तुम लोग संजीदा ही नहीं हो अपने फ्यूचर के लिए। यू पीपल आर नॉट सिंसियर अबाउट योर ओन फ्यूचर। Tell everybody to join the lecture. Why the total span is 13? स्पैन कितना रहेगा? 9 मीटर में से माइनस करना है हमको। 9 माइनस 4.17 कितना है? 4.7 था ना, 4.7 तो कितना हो जाएगा ये? 4.3। सो 2.15 रहेगा। दिस इज नॉट 4.15, इट मस्ट बी 2.15। दिस इज 2.15। स्पैन 9 मीटर है तो मुझे बताना चाहिए ना। इट इज 44.6। तो कितना हो जाएगा फिर ये? ये करेक्ट रहेगा। 4.7 एंड 4.7/4। रिएक्शन इनटू 4.5। 4.5 इज द सेंटर बिकॉज द टोटल स्पैन इज 9 मीटर। ये टोटल 9 मीटर में से अगर 4.7 जाता है 2.15 2.15। चलिए फटाफट आंसर दीजिए मुझे। रिएक्शन माइनस 4.5, रिएक्शन इनटू 4.5 माइनस 18.92 इंटू 4.7/2, 4.7/4। चलो आंसर दो यार। अगर एक आंसर के लिए अगर इतना खेलोगे तो किसके पास टाइम है? There are too many things which are to be covered in the lecture. क्या ऐसा है यार, इनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल दिख रही है। What is the answer? Where are others? वन 47.83। हाँ ये हो सकता है। अरे लेकिन दूसरे लोग किधर है क्लास में? Why they are not there? यार साला ये ऐसा थोड़ी पढ़ाया जाता है यार। तुम लोग भी सारी सीखना नहीं चाहते हो। 147.83 किलो न्यूटन मीटर। So the live load bending moment is 147.83 kilonewton meter. तुम लोग सीखने नहीं जाते यार। आई एम हेल्पलेस, आई कांट डू एनीथिंग। बाद में रोना मत मेरे नाम से। ओके, द live load bending moment is available. What we have to do? See, यहां पर हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल गो फॉर डिजाइन। अच्छा, क्या हम शेयर फोर्स भी कैलकुलेट कर लेंगे बिकॉज ऑफ लाइव लोड? वी विल कैलकुलेट शेयर फोर्स ड्यू टू लाइव लोड।
शेयर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ वी हैव टू प्लेस द व्हीकल close the support such that the dispersion ends at the center of this support. ऐसे एंड होना चाहिए डिस्पर्शन. So this is the span on which the effect of load must be. When the live load will be maximum, when the shear force will be maximum, जब लाइव लोड सपोर्ट के नजदीक है. बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या किया था? द लाइव लोड वाज प्लेस्ड एट द सेंटर. फॉर shear force, the vehicle is placed near the support such that the dispersion is ending at the center of the support. If this angle of dispersion is 45 degree, if this is 45 degree, so how much this will be equal to? ये कितना रहेगा? 0.55 मीटर. 0.55 meter. This contact length is 3.6 meter. So this will be total equal to 4.7 meter. It means that the dispersion will be for a span of 4.7 meter, and the remaining distance will be 4.3 meter because the total span is 9 meter. Now what is the intensity of load? अब ये इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? Again the vehicle is to be placed near the support. The vehicle is to be placed near the support along the span, or be across the span. How it will be across the span? Across the span, we have to keep it at the same minimum clearance. What must be this minimum clearance? 1.2 meter. This footpath is 1.5 meter. This is 0.85 meter. It is 1.2 meter. This is again 0.5 meter. और ये 0.85 meter. और ये देखेंगे तो how much it was? 3.5 meter. And how much is remaining is 1.5 meter. ऐसे ही था. We have to keep the vehicle at the minimum clearance. So this is how we have to keep the vehicle along and across. This is across the span. Right? ऐसे रहना चाहिए in the direction of width. ऐसे रहेगा vehicle. प्लान में कैसे दिखेगा? प्लान में ऐसे दिखेगा. फुटपाथ से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये फुटपाथ है. अभी व्हीकल हमने यहां रखा है. द व्हीकल इज प्लेस्ड नियर द सपोर्ट. सपोर्ट के नजदीक है. फॉर हाउ मच डिस्टेंस अलोंग द स्पैन द डिस्पर्शन इफेक्ट इज फॉर 4.7 मीटर. सो 4.7 ऐसे रहेगा यहां से सपोज यहां तक. तो डिस्पर्शन इफेक्ट यहां हो रहा है फॉर ए स्पैन ऑफ 4.7 मीटर अलोंग द स्पैन. अभी अक्रॉस में कैसे हो रहा है? अक्रॉस में कैसे रहेगा? दिस इज वन कॉन्संट्रेटेड लोड, दैट इज दिस. इसका कितना डिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट रहेगा? बी इफेक्टिव. देखो व्हाट इज द इक्वेशन? अल्फा इन ब्रैकेट 1 माइनस a डिवाइड बाय l नॉट प्लस b1. अल्फा डिपेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ b by l नॉट. तो b by l नॉट का वही रेशियो है जो पहले था. तो b by l नॉट का जो रेशियो था उसके अकॉर्डिंगली जो अल्फा का वैल्यू था इट इज सेम थिंग. 2 पॉइंट कितना है? हाउ मच दैट वैल्यू ऑफ अल्फा? 2 पॉइंट समथिंग. मुझे दिया था अभी किसी ने आंसर. 631. 2.631 इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, क्योंकि b by l नॉट का रेशियो वही रहेगा जो पहले था. सिंपली सपोर्टेड स्लैब है. गेट अल्फा. व्हाट इज a? A is the position of the concentrated load from the nearer support. We are talking about this concentrated load. This is the support which is nearer. तो ये concentrated load यहाँ एक्ट हो रहा है. वन ट्रैक.
and this is the nearer support. ये सपोर्ट ज्यादा डिस्टेंस पर है. The support which is nearer, from there we have to consider, and that distance is A. So how much this was? 4.7. So it will be acting at half of that. So that is 2.35 meters. So it will be multiplied by 2.35. In bracket 1 minus A, 2.35. Divided by L naught, 4.7. Plus B1. B1 is the same thing. अगर ये ट्रैक है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्पैन, यहां से इसका डिस्पर्शन कंसीडर करना है 45 डिग्रीज. सो दिस इज B1. B1 will be equal to 0.85 plus twice of 0.1. So that was equal to 1.05 meters. Plus 1.05 meters. So what is the value of effective width on which the dispersion of this load will be? ये लोड इसके दोनों तरफ कितना width तक डिस्पर्स होगा? That is the width on which the dispersion effect of the load will be. चलिए कितना है मुझे आंसर दीजिए. प्लीज सिट विद द कैलकुलेटर्स, प्लीज सिट विद द कोर्स. यार सब्जेक्ट आपको पढ़ना है यार, सीखना आपको है. इंजीनियर आप बनने वाले हो, आपका लाइफ है, आपके लिए मार्केट है ना. ये बहुत सारी चीजें हम सीखते रहते हैं तो हमारा इवोल्यूशन होते रहता है. वी कीप ऑन गेनिंग द नॉलेज, वी इवॉल्व, वी लर्न. This is how the dispersion effect of the load will be. On how much width the dispersion effect will be? What is the B effective? Alpha A in bracket 1 minus A divided by L naught plus B1. और ये सब के लिए मैंने क्लॉजेस बताया है. हाँ, how much that answer will be? चलिए आंसर दीजिए मुझे. अल्फा ए इन ब्रैकेट 1 माइनस ए डिवाइड बाय एल नॉट प्लस B1. What is the effective width on which the effect of this load will be? मैं ये डिटरमाइन कर रहा हूं कि कितना, what is the influence field on which the effect of this load will be. कितना एरिया पर इसका इफेक्ट होगा. बेंडिंग मोमेंट के लिए लोड को हमने सेंटर पर रखा था. बेंडिंग मोमेंट के लिए हमने लोड को सेंटर पर रखा था. शेयर फोर्स के लिए हमने लोड को नजदीक रखा है सपोर्ट के. I will consider as 4.14 meter. I will consider this as 4.14 meter. So on one side कितना रहेगा ये 2.07 meters. देखिए अगर मैं इसके सेंटर से ये डिस्टेंस देखता हूं तो इट इज 1.5 प्लस 1.2 प्लस 0.85 by 2. कितना रहेगा? इट विल बी समथिंग 1.5 1.2 तो ये 2.7 यही हो गया है, प्लस 0.4 तो ये 3 मीटर से ज्यादा हो गया. जबकि इसका डिस्पर्शन 2.07 तक ही आएगा. 1.2 प्लस 0.85 by 2. अगर ये सेंटर से डिस्टेंस देखता हूं मैं तो ये 2 मीटर से कम है. इसका मतलब इसका सेंटर लाइन से अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो यहां तक इफेक्ट आने वाला है. फुटपाथ में भी जाएगा थोड़ा सा, लेकिन नॉट इंटायर. दिस इज दिस 2.07 meters. इज इट ओके? और ये कितना रहने वाला है यहां से यहां तक? 1.2 प्लस 0.85. सो दैट इज 2.05 मीटर. इसका मतलब यहां से ये इसके सेंटर लाइन के आगे तक चले जाने वाला है. अगर मैं इधर डिस्पर्शन का इफेक्ट कंसीडर करता हूं, क्योंकि दिस इज अप टू ओनली 2.05 मीटर और ये 2.07 मीटर है, तो इसके आगे निकल जाएगा. इसका कंसीडर करते हैं तो इसके आगे निकल जाएगा. ये 3.5 मीटर है तो और यहां से देखेंगे तो और थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो फुटपाथ तक भी नहीं आएगा. ये लोड यहीं से निकल जाएगा. सो दिस इज द एंटायर विड्थ on which the effect of this load will be. How much it is? This is 2.07. ये center to center जो distance रहेगा, this will be 2.05, and this side again it is equal to 2.07. So what is the B effective net? That will be equal to 2.07 plus 2.07 plus 2.05. So it is 2.07 plus 2.05 plus 2.07.
आप मुझे जो भी आंसर देंगे उसके रेफरेंस में मैं यहाँ पर सोल्यूशन बताऊंगा। अगर आपने मुझे रॉन्ग आंसर दिया तो वी आर गोइंग टू गेट रॉन्ग सोल्यूशन। सो हाउ मच इट विल बी इक्वल टू 4.14 plus 2.05. So it is 916. So it means that the effect of this load will be for a width of 6.19 meter. So this is, यहाँ पर थोड़ा सा फुटपाथ में है लेकिन इधर फुटपाथ में नहीं है, ये है width. This is the patch on which the effect of load will be. तो ये कितना है 6.19 meters. That's all. बेंडिंग मोमेंट के लिए हमने व्हीकल को अलग पोजीशन पर रखा अलोंग द स्पैन, ये सपोर्ट के नजदीक रखा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट के लिए सेंटर पर रखा. अक्रॉस द स्पैन इट इज एट द सेम मिनिमम क्लियरेंस एंड वी हैव गॉट द एरिया ऑन विच द इफेक्ट ऑफ दिस लोड विल बी. देन व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लोड? अभी लोड का इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? हाउ मच विल बी द इंटेंसिटी ऑफ दिस लोड? How much will be the intensity of load? The intensity of load will be 700 divided by 4.7 multiplied by 6.19 multiplied by the impact factor is same 10%. Impact factor depends on span, depends on material which is used for the construction, depends upon what is the nature of load, depends upon whether it is wheeled or tracked. तो जो कंडीशन मूवमेंट के वक्त है वही कंडीशन शेयर फोर्स के वक्त भी है. ऑल द वेरिएबल्स आर सेम, दैट्स व्हाई द इंपैक्ट फैक्टर इज सेम 10%. सो गेट द इंटेंसिटी ऑफ लोड. चलिए, हाउ मच इज द इंटेंसिटी ऑफ लोड? लोड डिवाइडेड बाय एरिया. तो यहां पर कितना इंटेंसिटी ऑफ लोड रहेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग द शेयर फोर्स? प्लीज गिव मी द आंसर. What is the intensity of load? चलो कैलकुलेशन करते रहो, मुझे पैरेलल में आंसर देते रहो आप लोग. What is the intensity of load? 24.06. Okay, fine. Thank you. So the intensity of load here is 24.06 kilonewton per meter. Now if I consider 1 meter wide strip, so it will get kilonewton per meter square. That will get multiplied by 1 meter. So that will be 24.06 kilonewton per meter. This is 4.7 and it will be 4.3 meter. So the reaction will be greater at this end. So get the reaction here and that is nothing but the shear force. क्योंकि यहाँ पर कम रहेगा, ऐसा रहेगा shear force. यहाँ पर maximum shear force आएगा. This is SFD, the shear force diagram. चलिए, give me the reaction at this end. How much is the shear force at the left end or the reaction? That reaction will be the shear force. चलिए, I expect others also to solve the things. यार दूसरे लोग भी सपोर्ट करना चाहिए, सॉल्व करना चाहिए. आप सब लोग हेल्प कीजिए. बेटा तुम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, तुम लोगों को सीखना चाहिए यार. कैलकुलेटर्स लेकर बैठो, बुक्स लेकर बैठो, IRCs लेकर बैठो. मैं सिर्फ तुम लोगों को ऐसे समझा सकता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ. आई कांट डू एनीथिंग मोर देन दिस.